Good morning, everyone. This is Farooq Asam, and you are watching us on Oxford Talks. Today, I'm here with my two students, Mr. Zad. Zad, who is going to be a teacher. Right today, Mr. Zad, you are going to play a role of a teacher, Yes, sir. and you will go for an interview. Fine. And I have my next. I have my second student, I'm Mr. Dilshad. Dilshad. So I have Mr. Zad as a teacher and Mr. Dilshad as a principal. No. Say not hello. There's an interview. Mr. Principal is already sitting in the Chair. cabin in his office. Yes. You stand on the main gate, and the gate is a bit locked from inside. Not locked, it's closed from inside. And stand on the gate and ask, "May I come in, sir?" And start like that. Fine. May I come in, sir? Yes, come in. Speak loudly. Yes, come in. Yes, come Come in. in. Hello, sir. Hello. Wait. Actually, you both have no experience of interview. Yes, sir. You don't have experience of facing any interview, and I hope you don't have experience of taking any interview. So in between, I'm going to help you. Follow my directions. Yes. You will speak your sentences yourself. While speaking, if there is some problem, I'll help you with the corrections. Yes, sir. Okay, so now as you have come, may I come in, sir? You have already entered. It is his duty. He will tell you, sit down, and you will say thank you. Can we continue now? Once again, repeat. May I come in, sir? Yes, come in. Yes, come in. Please sit down. Okay, and no need to say please. You are a principal there. Okay. So he has come for his own work to get a job. So directly you can say sit down. Sit down. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now, you as a principal ask him, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? What am I help you? What can I help you? Can I help you? Repeat. What can I help you? What can I Help you. help you? Sir, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ. Sir, I am here for an interview. Superb. Repeat. Sir, I am here for an चलेगा. interview. मैं यहाँ हूँ. I am here for an interview. Repeat. Sir, I am here for an interview. Okay. Which subject you touch? Okay. Okay. कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते? पहले इनको बोलिए. ठीक है. आप अपना रिज्यूमे मुझे दीजिए. क्या बोलेंगे? आप अपना रिज्यूम. हाँ हाँ. Wait. कह रहा है. Hello. Wait. Come here. Come here. Wire is there. Take care of the wire. Without touching. There is a register. That register. Fine. हाँ. And आप कहेंगे कि आप अपना रिज्यूमे मुझे दीजिए. Okay. Wait. Firstly, you give me a resume. No, firstly, there is no word called firstly. First. First. Okay. First of all, you give me resume. Your resume. Resume. You Re- give me your Resume. resume. जी sir. Yes, sir. Speak. Yes, no sir. pressure. Speak loudly. Yes, sir. Yes, sir. ये रहा मेरा resume. This is my resume. This is my resume. ठीक है. Okay. आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए. What's your name and tell me about yourself? Very good. What's your name? And you tell him about yourself now. My name is Zad Murad. Yes. And speak loudly. My name is Zad Murad. And talk about your qualification now. I am 12 passed. अरे मेरा भाई, आप टीचर के जॉब के लिए आए हो, बीएड कर चुके हो, ऑलरेडी जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो, अपनी ओरिजिनल बात नहीं बताने का है. No problem. ये क्या पूछा? तो हम जॉब के लिए आए हैं. तो अगर हम जॉब के लिए आए हैं, मतलब हम 12 पास है तो हम जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं, और कोई टीचर रखेगा भी नहीं, है ना? टीचर के लिए आज की जरूरत की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बीएड होना चाहिए. तो आप बोलेंगे, सर माय नेम इज मुराद एंड मैंने बीएड कर लिया है एंड मैं 2 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, लाइक दैट. सर Sir, मेरा नाम मुराद है. वो sir, my name is Zad Murad. वेरी गुड. And- Yes. I have And- completed my B.Ed and I am already teaching somewhere for the last 2 years. from the So last इसको 2 years. बोलेंगे I have been already teaching somewhere for the last
2 years. Repeat. I have been already teaching in somewhere. In from the- not. I have already teaching. I have been already teaching somewhere for the last 2 years. I have been already teaching somewhere from the last 2 years. For the last For the last 2 2 years. years. Okay, that's good. कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? Which subject do you read? Do you Touch. teach? Teach. ये तो मेरी बात. Teach. कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? फिर से बोलिए. Which subject do you teach? Teach. I am teaching physics. सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ. साहू इट्स अ B1 B5. हाँ. Sir, I am teaching. आई एम टीचिंग भी बोल सकते हैं. मैं पढ़ा रहा हूँ बट बेहतर होगा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ. Sir, I teach. फिजिक्स. बट स्कूल में फिजिक्स नहीं होता, साइंस होता है. जो फिजिक्स पढ़ा साइंस का सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, कि अलग अलग पढ़ाते हैं? अलग अलग भी होता है सर. अच्छा अलग अच्छा अच्छा. तो बेटर यू टॉक साइंस. सर मैं साइंस का टीचर हूँ एंड मैं साइंस पढ़ाता हूँ. Sir, I am the teacher of the साउंड science. साउंड Sir, I am the teacher of the science. Science. And I teach. I teach science. I teach science. Science. I'm a teacher of science and I'm teaching Science. science. Okay. साइंस में कौन सा सब्जेक्ट? साइंस में कौन सा सब्जेक्ट? In science, which subject do you read? Do Do you you teach? Do you teach? Repeat. In science, which subject do you teach? Very good. In science which subject? सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एंड बायोलॉजी भी मैं पढ़ा देता हूँ. Sir, I teach physics, chemistry, and biology. Biology also. Biology also. Biology also. Repeat the sentence with the Sir, sound. Sir, I teach physics, chemistry, and, And also? biology also. And biology also. And क्या आप मैथ भी पढ़ा सकते हैं? Okay. Can you teach math Also. also? Speak loudly. Can you teach math also? Yes sir. Yes, sir. मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ. Yes, sir. I can teach math also. Speak loudly. Sir, I can teach math also. सर मैं घर पे एक कोचिंग चलाता हूँ, वहाँ पे मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ाता हूँ. Sir, in house. At I, the home, Sir, at the home I teach. हाँ चलो. Sir, at the home I teach math also, and I'm See, already. at the home I have a small coaching in the evening. I teach the student in the evening. Sir, at the home I teach I teach some students some students in the evening. in the evening. उनको मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ और मैथ भी पढ़ाता हूँ. Sir, I teach their science and math also. Both. Both. हाँ. Okay. No Which problem. class? No problem. Which class student do you teach? हाँ. Very good. Which class students do you Teach. teach? सर मैं 10th क्लास तक के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. Sir, I can teach Up to 10th up class, to 10th class any student. any students. मुझे प्रॉब्लम नहीं है. I have no problem. I have no problem. Very good sound. I have no No problem. problem. Okay, sounds good. अभी आपने बोला कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं. You tell me. हाँ? इसने ऑलरेडी कहा है. You- आपने मुझे बोला शुरू में You told me. आप अभी आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं क्या? You told me you taught somewhere else. Right out. Teach them. You teach somewhere देखिए, else. डाउट भी तो है. Yes sir. इसका मतलब हो गया काम हो गया. हो गया. एंड टीच भी मैंने मतलब काम अभी जारी. होता, मतलब जारी मतलब कैसा, कंटिन्यू नहीं, हुआ करता हुआ करता है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो आपने मुझे बोला आप है. नहीं मुझे बोला. ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं कहीं या हाँ You, भी बोलो you बात. told me हाँ. you teach somewhere else. हाँ चलेगा ठीक है. यू टोल्ड मी. You teach somewhere else. बेटर होगा यू आर टीचिंग समवेयर ऑलरेडी. Yeah, you are teaching somewhere already. रिपीट द सेंटेंस. You told me you are टेन teaching. को आवाज क्लियर कीजिए. टोल्ड. You are told me. You told me. Okay, हाँ. sorry. You told me you teaching somewhere else. यू आर टीचिंग You समवेयर. are teaching somewhere else. एल्स नहीं. Else. यू आर टीचिंग समवेयर. You are teaching somewhere. जी सर. Yes, sir. मैंने कहा. I said. I said. Speak loudly. I said. मैं पढ़ा रहा हूँ. I teach I somewhere. am I am teaching teaching somewhere. somewhere. तो आप जहां भी पढ़ा रहे हैं क्यों छोड़ना चाहते हैं? जहां भी wherever. Wherever you teach B4 में हम बात करेंगे. आप पढ़ा रहे हैं. teaching. हाँ.
wherever you teaching, Oh my why God, you oh my God, रिकॉर्डिंग का प्रेशर है. no sir. You are good English speaker, I know. ठीक है, देखिए हमने अगर बिफोर लगाया तो क्या बिफोर बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है? No, sir. नहीं आ सकता है ना. तो यू आर, देखिए आप जहां कहीं भी पढ़ा रहे हैं आप उसे छोड़ना क्यों चाहते हैं? Wherever You you are are teaching. teaching, repeat. Wherever you are teaching, why you Why leave the do you want to live why there? do you leave? They want to. No. Why do you Want to to live. Why do you want leave? to live there? There. Repeat. Why आप do जहां भी पढ़ा रहे हैं wherever you are teaching, why do you live there. there? सर Sir, छोड़ने की कोई खास कारण नहीं है सर. I, There is no any special reason. there is no special reason for leave. Speak loudly, Mr. Zad. There is no special reason for leave To there leave. to leave. There is no any special reason to leave there. Actually, मेरा एक दोस्त है जो आपके यहाँ ऑलरेडी पढ़ा रहा है. Actually, there is my one friend In your school, in your school. a sound is very slow, more sound. Actually, there is one of my friend in your school. He is already teaching. He is already teaching. उसने मुझे बताया आपको एक साइंस की टीचर की जरूरत है. He said that you You need need a science you need a science teacher, teacher. And आपके यहाँ सैलरी वहां से ज्यादा है. and आप देते हैं ज्यादा सैलरी And उस you स्कूल pay- से ज्यादा. you pay more salary More than than that school. more than that school. सर Sir, इसलिए मैं आया हूँ. that's why I have come. that's why I have come here. Repeat. That's why I have come That's here. why I have Come here. come here. Speak again. That's why I have come here. Okay. Okay. तो आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्यादा सैलरी की वजह से. Okay. You want to join my school because of more salary? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ. Actually, sir, I Tell you tell you the fact. the fact. More sound. Again, speak. हाँ. Actually, I tell you the fact. Fact. सर पिछले साल मैंने शादी कर लिया है. Sir, last year I Married. married. हाँ. Audience, if you want to marry, I have no objection. You can also marry. But before you marry, you first confirm that you are settled and earning much money. Life is of the married person only better if you have income. My dad has already married and he is already a teacher teaching in the school, earning money already. हाँ. तो सर पिछले साल मैंने शादी किया है और मेरे एक्सपेंस जो है वो बढ़ गए हैं सर. Sir, last year I married. I have married Sir, last year I have married, and so and so मेरे एक्सपेंस बढ़ गए हैं. my expenses are more. My expense has increased. My expenses has increased. Expenses करेंगे तो ये plural हो गया तो फिर have लगाएंगे. तो my expenses have increased. My expenses have increased. इसलिए मैंने सोचा, That's why हाँ मैंने सोचा, I thought, think को B2 करेंगे, है ना. मैंने सोचा, इसलिए मैंने सोचा, that's why I thought मैं आपका स्कूल ज्वाइन करूं. I joined your school, एंड मेरा दोस्त भी है तो मुझे और अच्छा भी लगेगा. and my My friend friend is is here. already here, रिपीट विद द साउंड अगेन. and my friend is already here, तो मुझे अच्छा लगेगा. and I feel good here. I will feel good here. I will feel good here. देखिए मुझे आपको हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. See, You मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है I don't have any problem to to hire you, you. लेकिन but मैं चाहता हूं कि पहले आप 5 दिन हमें डेमो क्लास दें, मतलब बच्चों को पढ़ाएं. मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा. अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं फिर मैं आपको रिक्रूट कर लूंगा. मुझे कोई दिक्कत नहीं. I want I want to you not to. you. मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ 5 दिन पढ़ाए एज डेमो. Okay. I want you टीच. teach demo class for 5 days. डेमो डोंट वर्ड डेमो नहीं बोलना. आई वांट यू टीच Okay. फॉर 5 days here. Okay. Okay, sir. I want you
to teach 5 days here. नो, तू नहीं लगाएगा ना. I want, खत्म हो गया सेंटेंस. You You to teach. हाँ. you teach. I ना, want sir. you teach. तू नहीं Teach. लगाएंगे. I want you teach 5 days here. है. अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, If you good study, if you teach good, if you teach good, मैं आपको रिक्रूट कर लूंगा. I Will. will recruit You. I'll recruit recruit you. I will recruit you. सर मुझे कोई दिक्कत नहीं. Sir, I have no problem. स्पीक लाउडली. Sir, I have no problem. आप बोलिए मैं कब से आ जाऊं. You say whenever I From come. when? From when? कब से? From when Do I come? do I come? You all audience understand? Yes, sir. Just keep watching such videos and you will become in the next few days the best English speaker. Again repeat. Speak with a sound. आप बताइए मुझे मैं कब से आ जाऊं. Sir, when I come here, You tell me. you tell me From when? from when Should I come should I to come? teach? Should I come to teach? आप एक काम करो. कल से आ जाओ. आप एक काम करो. You do one thing. one thing. Sound is very slow. You think you do one thing. आप कल से आ जाओ. You Come. come to tomorrow. You come. You come tomorrow. From. See, कोई काम शुरू हुआ और चलता रहेगा. तो वो जो शुरुआती का टाइम है उसके लिए क्या लगाएंगे? From. Beginning of the time. From हम कहाँ लगाते हैं? Beginning of the time. ठीक है, दो जगह लगाते हैं. एक तो separations के लिए लगाते हैं और दूसरा beginning of the time. हाँ, तो आप कल से आ जाओ. You come From. you come from tomorrow. चलो सर, मैं कल छोड़ दीजिए सर. 2 दिन मुझे छोड़ दीजिए. मैं अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर दूंगा. मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा. Sir, leave आप me 2 today. दिन छोड़ दीजिए. Sir, you leave me 2 days. वेरी गुड. रिपीट विद साउंड. Sir, you leave me 2 days. मैं First पहले हाँ. First I informed. I will First I will inform to my principal sir to my principal sir कि मैं छोड़ रहा हूँ. and that I am leaving I am leaving your school. your school. मैं सर 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लूंगा स्कूल. Sir, I can join. हाँ चलो ठीक है. Sir, I can join your school after 2 days. वेरी गुड. साउंड. Sir, I can join your school after 2 days. ठीक है. Okay. तो आज हो गया 6 जनवरी. Today is 6 January. तो आप 2 दिन छोड़ देता हूँ. 7 and 8 आप 9 को ज्वाइन कर लेंगे. मैं आपको 2 दिन छोड़ देता हूँ. I lived 2 days. Leave नहीं. B1 I leave you I leave you 2 days. 2 days. तो क्या आप 9 को स्कूल ज्वाइन कर लेंगे? Can you Class start Can 9. you join the school? Can you join the school from 9th January? 9th not from 9th January. 9th ranking होता है. तो can you join From me 9 January. from 9 January? जी सर. Yes, sir. मैं ज्वाइन कर दूंगा Sir, I will join your school at 9 January. on On at 9 on. January. Repeat the sentence. Sir, Sir? I will join your school on 9 January. 9 January. It's okay. It's तो okay. मैं मिलता हूँ तुमसे 9 जनवरी को Okay, I will meet you on on 9 January. sir. Sir. No problem sir. No problem. सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? Sir, I say you. No. Can I ask you? Can I ask you? Can नहीं. सर प्रिंसिपल है, सीनियर है, एंड सीनियर में हम लोग परमिशन के लिए कैन नहीं लगा सकते हैं. क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे. अपने पास परमिशन के लिए 2 वर्ड है. एक मे है मॉडल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कैन है. तो हम लोग कैन नहीं लगा सकते सीनियर के लिए, है ना. तो आप पूछिए कि मे आई आस्क यू वन थिंग. Sir, may I ask you something? हाँ चलेगा. चलो फिर से बोलिए. Sir, may I ask you something? पूछो. Ask. आस्क. सर मेरा सैलरी क्या रहेगा? Sir, what will be my salary? वेरी गुड. रिपीट. Sir, what will be my salary? देखो सैलरी के लिए तुम टेंशन मत लो. सैलरी अच्छा रहेगा. Expectation पूछ. हाँ नहीं अभी नहीं. 5 दिन डेमो के बाद. Okay. एक्सपेक्टेशन क्या है? जो मेरी सैलरी है Yes sir. उसके स्कूल से हम ज्यादा दे ही रहे. तो आप इनको बोलो ठीक है सैलरी का तुम टेंशन मत लो, सैलरी तुम्हारा अच्छा रहेगा. Don't take tension salary. डोंट टेक टेंशन ऑफ सैलरी. Don't take tension of salary. तुम्हारी सैलरी अच्छी रहेगी. Your salary is good. विल बी गुड. Your salary will be good. सबसे पहले आप 5 दिन डेमो दीजिए, फिर हम लोग बैठेंगे और आपकी सैलरी का डिसाइड करेंगे. First of all, you give
5 5 days, demo classes. 5 demo classes. फिर Then हम दोनों बैठेंगे, we should अब हम दोनों बैठेंगे, we both will sit, we both sit together. we both will SIT sit shit नहीं, we both will sit, We both will sit together. no shit not, SIT sit, sir, sit, Sit. हाँ, no sure not, see one SIT sure, ये नहीं, sir, Sure. we will sit, Sit. हाँ we will sit together, We will sit together. sure आप निकाल देते हैं, We will sit sit together, together. and And फिर हम लोग सैलरी की बात करेंगे, we will sit. then after हम लोग सैलरी की बात करेंगे, Then after we talking will the talk salary. about salary. About salary. सर मेरी मैडम भी पढ़ाती है, अगर आपको एक फीमेल टीचर की जरूरत होगी तो बताइएगा. Sir, my madam is My madam also my madam also teaches. अगर आपको किसी मैम की जरूरत होगी तो बताइएगा मुझे. If If you need, a madam, you will then tell me. you will tell me. पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैडम का देख लेंगे. First of all, you join the class. And then I'll see Then I see your madam. your madam. Nice to meet you, sir. Thank you very Nice much. to meet you, sir. Shake the Thank hand. you very much. Wait, shake the hand. Shake the hand proper and say nice to meet you, sir. Nice to meet you, sir. Thank you very much, you. sir. Thank you very much, sir. Most welcome. Same here. Most welcome. Can you all clap the audience? Great. See, however they have spoken, originally they can do better actually. I know Mr. Dilshad, you are a good English speaker now. You have learned, you speak very good, but recording was the pressure on you. No, So sir. take it easy. Same like that. Whereas I know the way you come and speak, you can do better than this. So when you are in the habit of facing the camera, I have a guarantee that I have a guarantee you will have no problem and you will improve also. So that's okay, my dear audience. If you are watching us, I just once again remind you, if you have not subscribed, do it and watch the video on the regular basis. You are going to improve how to speak in English with the guarantee. So I meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.